हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। आवाज तो आ रही है। आ जाओ भाई। किसी में नहीं आ रहा यार नेट। आ जाओ आ जाओ। तो इसको फिर बुरा लगेगा क्यों आ रहा है यार? बुरा तो नहीं आ रहा है क्या ये? ठीक तो है यार। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। इसमें नेल चेंज करना पड़ेगा अपन। नेल देख के भी कोई नहीं आ रहा। प्लेलिस्ट अच्छा टैग चाहिए। छोड़ो देखेंगे फिर बाद में। आओ भाई आओ हिंदी कमेंट्री चालू हो गया। हेलो भाई नेट स्लो है क्या मेरा? इसने टैग ही नहीं करा। अच्छा ये एक दिन वाला होगा। इसको डाल लूँ क्या ग्रुप में यार? किसने दिया है ये? शेयर हो गया है। मैं क्या कर रहा था? टैग टैग चाहिए। हेलो 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 हेलो। You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, Okay, we're hold back from tussling Hello. with the Valen. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. जाओ भाई जल्दी हेलो। That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do.
In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. बैटल पास Fortunately, देख we लेना है. weren't completely taken by surprise. I detected the hilly churls were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Paimon remembers. This When can we be first करना क्या met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. नहीं होगा. I know, it's strange. Hilly churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the hilly churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. क्या कर रही है? ओके. ये क्या है? Before entering another. विश वाला कहाँ गया यार? ये है ना विश वाला. तो ये कैरेक्टर तो है अपने पास. अरे आगे का दर. चोरी. अच्छा मुझे ये चाहिए. इसके लिए तो है. ये विश करने के नहीं है. ये विश करने के नहीं है. रेंडर कि करूँ क्या विश? कोई है चैट में? नहीं यार. मेरे ख्याल से पोस्ट डालना पड़ेगा यार. एक कम्युनिटी पोस्ट डालना पड़ेगा. और ये तो विश करते हैं. बैटल पास में क्या है वो देखता हूँ. इसमें तो क्रिस्टल नहीं मिलता है यार विश करने वाला. तो क्या करूँ? जल्दी रहा करो. टाइम आप जाओ यार. आ जाओ भाई आ जाओ. जल्दी आओ. जल्दी सुबह जल्दी. करते हुए
वो कर दे अरे क्या करना नहीं Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting Clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. तो भाई Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the Four Winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes.
And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. I agree. He sets a terrible example for someone who's cavalry captain. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. It's been getting quite busy recently. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Hello, brother. Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. हिंदी स्ट्रीम चालू हो गई यार। Really? लोकल के स्ट्रीम करो तो कोई Oh, आने का तो दिक्कत well, नहीं। I guess this is goodbye for now. इतना गूंज रहा है यार ये। Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the winds may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. कर दे। That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. नहीं खुल रहा है। अबे इतना ऊपर कैसे कर रहा है? के जगह नहीं मिलता के लोगों को। This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us.
don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Liar! Oh, Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Liar, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Liar. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf, Barb! Hey, don't go! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's base? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake! I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara.
wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from the Zepelyarny Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yep, Traveler. As you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Teyvat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. It's been a while since we last visited the Knights of Avonius. Paimon wonders what Teen and Lisa have been up to recently. Let's go pay them a visit!
I'll race you there. Things are going so smoothly today. सर हमेशा ने ये तो समझ नहीं आ रहा। हेलो भाई, कोई तो आ जाओ यार। So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around.
Star-Snatched Cliff is known for its views. And a radish vegetable soup. You want to find out about the Dark Knight? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. I'm joking. Don't take everything. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No. I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Welcome to Mondstadt. You want to know about... In fact, I'm one of the few who has seen him with my own 2 eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Fresh fruit, only at Quinn's Fruit. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do if Master Diluc ever finds out? Huh? What's Diluc got to do with this?
Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think Diluc was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. We're both together after all. कुछ कर लेते हैं जब तक should hear कोई कर टीचर लाइब्रेरियन It's all for my daughter. मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं तो मुझे आज़माने की कोशिश Oh, it's you, cutie. To what do I owe the honor of your visit? Are you here to peruse the library? Or perhaps you're here to visit a certain someone? As considerate as ever, I see. Alas, what rotten luck. You just so happen to have caught me in the middle of some important work. I'll have to treat you to afternoon tea some other time. Wait, you're actually busy? With work? That's not a sight you see every day. You're right. The last time I was this consumed with research must have been way back at the academia. I haven't done this much thinking for a long time. It's rather exhausting. If you're that interested, why don't you join in on the fun? What do you say? Want to help me relive my days as a scholar? It's not polite to pawn off your work on other people, you know. Is that a no, then? It will be quite the rare opportunity to work together, and you would, of course, be generously rewarded. As you probably know, the Knights of Favonius have long conducted research on alchemy. But most of that research has been carried out in a laboratory setting. The public's knowledge of alchemy is quite minimal. Which means that up to this point, most of our research and discoveries have remained quite distant from people's daily lives. We've put a lot of mora into the research, but have very little to show for our efforts. Noting this disconnect, Jean decided to start an initiative where we'd share the fruits of our labor with the people. For now, that means introducing them to several different kinds of alchemical potions. As it happens, I already have some experience with this work. Even though I usually work at the library, I have lent my support in the past to the management of the Knight's potion supply.
Potioneering was also one of my academic specializations back in the day, so Jean thought I was the best person for the job. But to create potions practical enough to support the daily needs of the people, a lot of adjustments had to be made to the ingredients we use, and the overall alchemical process also needed to be simplified. All in all, what started as a relatively simple research project soon evolved into something exceedingly complicated. So, are you asking us to help you with your research? 'Cause, you're not exactly talking to two alchemy experts over here. No worries. I've already thought of the perfect job for you two. Alchemical practices are becoming more and more advanced, but there's still a disconnect between our research and the general public. What we really need is to collect feedback from the people. Otherwise, we won't truly know if we're satisfying their needs. But if we want to conduct research and collect feedback at the same time, we need to go about things in a more efficient way. So, I thought the best way to do that would be to open up a potion shop. That way, we could continue to handle the alchemy side of things while also being able to interface with the public and understand their needs. Oh, it's like killing two pigeons with one stone! Smart idea, Lisa! Well, of course. And who better to take on this job than one of the most accomplished among our ranks, the Traveler? When I was at the academia, students would often help out with each other's research projects. I'm sure my cuties wouldn't want to miss out on the opportunity to experience that sort of youthful enthusiasm for themselves. Yeah, you make it sound nice and all, but Paimon still thinks you're just looking for a way to pawn off your work. I knew I could count on you. When all our work is done, I will personally see to it that you're generously rewarded. All of the initial preparations have been made, so let's head to the shop. We'll finish our discussion after we get there. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं, तू मुझे आज़मा के कोशिश न कर। बटर स्कॉच ब्रेड, हेलो ब्रदर, कैसे हो? कहाँ से हो यार? हिंदी आती है क्या? आज हिंदी में स्ट्रीम कर रहा हूँ तो कोई आ नहीं रहा। अभी तक नो कमेंट कर रहा तो आ रहे थे। सबको लग रहा है कि नो कमेंट स्ट्रीम में चल रही है ना। फर्स्ट टाइम गेंशिन, ऑफ कोर्स। यस, इट्स माय फर्स्ट टाइम। मतलब क्या है, आजकल के लोग सिर्फ गेमिंग के नाम पे बीजीएमआई खेलते हैं और फ्री फायर खेलते हैं। बोर हो गया तब खेल खेल। मैं बोला कुछ नया कर। कहाँ से अपन? इसमें ये अच्छे नहीं लगते जानवरों को मार के वो मिलता है। बीजीएमआई has gotten old। हाँ, फ्री फायर, बीजीएमआई, जीटीए, सिर्फ यही सब इंडिया के गेमिंग से परेशान हो गया हूँ मैं तो अभी ट्राई कर रहा हूँ गेंशिन का पूरा स्टोरी मोड पार करना है। It was a group effort. A whole bunch of knights helped out. और भी इतने सारे गेम है, Jean secured the कॉम्पिटिटिव गेम। initial funds to open the shop. Albedo and Sucrose provided the ingredients and equipment needed to brew the potions. स्टार ट्रेल करके। And the logistics company is handling the provision of all future supplies. गेंशिन को भी 3 साल हो गए, लेकिन इंडिया में उतना कोई Now खेलता with your नहीं है और help, ये it's like an गेम additional weight has been इसलिए lifted off my चूज किया मैं shoulders. क्योंकि
The Knights have been है, busy spreading the word about our shop over हाई the क्वालिटी past few गेम है, days. एक्शन भी है. So, we should be ready to open once we've finished our final preparations. Okay, let's not keep everyone waiting then. और Why don't you take these ingredients and try your hand at brewing a potion? मतलब थोड़े व्यूवर भी चाहिए था ना मेरे को, आए कर देखने के लिए आए. तो I am day one player. Day one player मतलब ये एम्बर कहाँ से आ गए यार? चलो भाई तो अरे self proportion. Place ingredients and cover more area to increase the tuning rate. For this one potion, when the tuning rate reaches 100% or higher, you can concoct the potion and receive the finished product for more area of efficacy. Press or drag ingredients to save them. प्लेइंग सीन्स रिलीज, ये इवेंट स्किप कर दो, अभी कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए. अच्छा रुको ऐसा चैलेंज ये वॉइस वर्क का नहीं होता है, नहीं हो रहा है यार. चैलेंज कर दी यार, एकदम कंफ्यूजिंग हुआ. ये एक और नहीं आ पाएगा यार, ये बहुत वो है. तो सेट कर और दिक्कत वाला है. सबसे टाइम कंज्यूमिंग इवेंट है ऐसा. नहीं रुको, अब चैलेंज कर दियो तो अब अभी बोला दो जगह छोटा है तो जितना हुआ उतना कर दिया यार. मैं तो इसको स्टोरी मोड देखना है मेरे को. इसके बाद इसका एक और होंकाई स्टार रेल इम्पैक्ट है, वो खेलना है. यू इनिशियली हैव वन चांस टू कंप्लीट द क्वेश्चन इशेप्ट. ला 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 ला. Ooh, इसके looks बाद like you ब्रोवल finished your स्टार है, potion. इतने सारे गेम. Now, all we need to do is put it on display for sale. बहुत सारे गेम है, सबको खेलना है, प्रैक्टिस करना है सबका. होंकाई टर्न बेस्ड गेम है, टर्न आरपीजी. हाँ उसको भी खेला था, मैं बहुत पहले खेला था, लेकिन अच्छा था, मजा आया था. Looks like we're done with all the prep work. Why don't we take a short break over there while we wait for customers to arrive? आप अभी क्या खेलते हो? अभी गेंशिन खेल रहे हो कि
बंद कर दिया खेलना। हैव यू हर्ड ऑफ विथरिंग वेव? विथरिंग वेव इसी में बोल रहे हो क्या आप? गेंशिन में ही बोल रहे हो क्या? सुना सुना तो है, बकबक बहुत करते हैं यार। गेंशिन एंड मोबाइल, हाँ मोबाइल लेजेंड यार, मोबाइल लेजेंड बाहर कितना फेमस है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में हमेशा रहता है वो। इंटरनेशनल ऑडियंस में मोबाइल लेजेंड बहुत फेमस है। Oh, seems like everything is going well. You've इंडिया already की sold your जो बड़ी first बड़ी batch गेमिंग of कम्युनिटी है potions. ना, वो लोग Not a bad नहीं start ले at रहे ना यार all. इनिशिएटिव, वो लोग As for सिर्फ what घुस potions गए you should हैं brew next, we'll need to consult the बीजीएमआई news फ्री from the फायर में। market. That means अभी staying up to date on the वैलोरेंट का latest थोड़ा news and trends to बढ़ try रहा है, and लेकिन anticipate वैलोरेंट भी people's उतना वो नहीं needs. है। It's an essential skill when it comes तो to business. गेंशिन जैसे गेम है विथरिंग वेव। अच्छा, नहीं नहीं, विथरिंग वेव फिर Don't अलग गेम है, worry. तो उसका नाम I नहीं सुना already हूँ took मैं। it upon myself to compile all the latest news on the market for you. ट्राई करेंगे उसको भी, पहले इसका पूरा स्टोरी। What do you think? Have any ideas मेरे on the को kinds of कंप्लीट करना potions you था। should sell next? स्काउट ने Go ahead गेंशिन and try to स्ट्रीम cultivate some herbs then. क्या बोले, स्टार्ट Bioalchemical किया था। processing can infuse herbs with अच्छा, different effects and फिर properties. Using different herbs in the brewing क्या हुआ, process बंद कर will, दिया in होगा? turn, वो किया alter होगा the 3 साल effects of पहले the यार, जब potion. गेम नया नया There's आया a होगा। whole bunch of पबजी combinations to वालों try. ने All right, मना कर cutie. दिया तो Why don't you गेंशिन get स्ट्रीम started? करने से। भाई इतना बढ़िया गेम है ना ये, अब क्या ही बोलोगे, वही ना, जैसे क्रिकेट चल गया है ना इंडिया में, वैसे ही बीजीएमआई को चलाना चाहते थे ये लोग, अब वो बैन हो गया, तो अब इंटरनेशनल मार्केट में तो अपना ये लोग बना नहीं सकते कुछ। डिफरेंट कल्टीवेशन एरियाज कैन वेक एन इंग्रेडिएंट सेपरेटली आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ। to be able to go to the night cafe with support staff। क्या करवाते हैं यार गेंशिन वाले भी यार। इसको कल्टीवेट करो, 12 है। कितना टाइम लगता है कल्टीवेट होने में यार? कैन आई सी और योर कैरेक्टर्स? हाँ रुको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये तो 4 बेसिक Seems है, like you've gotten the hang of the उसके बाद एक cultivation side of things. बारबरा खुली है, और Ah, I should क्या probably बोलना mention, चाहिए, a knight from the logistics company has बाकी arrived. 2 का नाम नहीं आ She'll रहा be है the यार। one handling the अरे provision मेरे of को all ये future बताओ, supplies. इसमें विश You should वाला go have a वो chat with मिलता है her in क्या a little स्टार bit. बैटल पास And परचेज after करने that, से? it'll be your time to shine. सॉरी फॉर दैट यार, कॉल आ गया था, मेरे ख्याल से इसको म्यूट कर देता हूँ मैं। बैटल पास परचेस करने से कैरेक्टर खुलते हैं क्या? मेरा ये है, बैटल पास परचेस करूँ कि नहीं मैं? कुछ फायदा है My इसमें बैटल role? पास परचेस करने का? Naturally, it was to ensure my मतलब cuties had मेनली मेरे all को the कैरेक्टर ही business and खोलना है, तो alchemy क्या knowledge बैटल they पास needed to परचेस करने से succeed. होगा क्या? Okay, I'll be rooting for you. Good luck. Paimon knew this would happen. एक तो ब्लेसिंग ऑफ द मून, क्या वेल्किन होता है, क्या होता है? जब आपको कैरेक्टर दिखा था, एक बैटल पास, दूसरा वाला वेल्किन मून। हाँ मेरे पास अभी एक क्या बोलना चाहिए, स्पॉन्सरशिप आया था। ऐसा कोई इतने कैरेक्टर है मेरे पास, अभी अभी तो चालू किया मैं यार। मतलब आप मेरा पास स्ट्रीम देख लो, मैं वेल्किन मून इज वर्थ इट। अच्छा, तो जो स्पॉन्सरशिप आया था ना, वो मेरे को बोल रहे थे कि पैसा नहीं देंगे, पे नहीं करेंगे, लेकिन वेल्किन मून का बैटल पास दे देंगे करके। नोएल है एंड ये क्या बीडू, क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं यार इसको? वेल्किन मून अगर खरीदूंगा तो मैं भी वही लेता हूँ, वो होगा क्या?
क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टर खुलेंगे उससे। माई 11 सर्कल वाले यार, आईपीएल चालू नहीं हुआ, कॉल करना चालू कर दिए थे। आपके पास आता है क्या कॉल? Greetings, Honorary Knight. Greetings, Paimon. My name is Freda. I'm a knight from the logistics company. It's such an honor to meet the famous You got traveler and his 90 loyal promos attendant. every day for 30 days. Paimon's fame is really अच्छा, spreading across the land. 9 6 कितना तो 27, One small correction though. Paimon's यानी his companion, not his attendant. 2700 My apologies. I guess I got a bit प्रीमोस होंगे carried मेरे away पास after 30 hearing दिन के all बाद। about your exploits. मैंने It's 6 just like मंथ का ले something रखा out है। of a अरे भाई novel. बहुत अमीर हो लगता। You're practically legends at this अब point. देखता हूँ वो जो स्पॉन्सरशिप bit वाले थे jealous, वो अपनी actually. सुपरवाइजर से बात किया हूँ, बोल रहा है उसकी Love to सुपरवाइजर wander रिप्लाई the नहीं land in करी है search अभी। of adventure, like one of those knights you read about in stories. तो Yeah, that's what I'm hoping मंडे at को least. बताऊंगा बोल रहे हैं। अब Anyway, अगर उसके पास से नहीं We've got मिला some मेरे prep को work to wrap up, right? तो My orders from the acting grandmaster are to support your business in any way that I can. If खरीदूंगा, there's फिर वेलकिन anything you मून वाला need, ही just खरीदूंगा। let me know. You're in luck. I just got a मेरे new को batch of पता ही provisions. नहीं था वेलकिन Please, मून वाला क्या होता take है a look and पास। see if anything catches your eye. एक कैरेक्टर के लिए सेव कर रहा हूँ, इसमें कैरेक्टर बहुत वो है ना। मुश्किल से खुलता है बोलते हैं, और लेवल अप करने में भी तो हालत खराब हो जाती है। 500 पर मंथ एंड वर्थ इट। और वो बैटल पास 1000 वाला है ना। ऑपरेशंस These operations handled actively and the current operation cycle resting on Lisa's chair can also achieve the same result. In completion of this. Can I see your shop section? Metal pass में you can select a 4 level. Weapon नहीं चाहिए यार। वेपन नहीं चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। इसमें करना क्या है भाई, इसको हटा दूं क्या? डार्क नाइट हीरो वाला करते हैं सीधा सीधा को बाद में करेंगे। वेपन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वेपन तो है मेरे पास, मतलब उतना खास तो नहीं है, लेकिन वेपन है ये दोनों काया और क्या नाम है अपना हीरो का क्या नाम है, जैसा कोई नाम ही नहीं है कि इसका जो नाम अपन रखे हैं वही है क्या? ये तो अभी अभी खुली है तो इसका ये वाला रख लेते हैं। अभी मैं बोलूँ इतना कम का अटैक डैमेज करने के लिए है ही नहीं कुछ। ये हो गया तो वेपन कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, वेट करो इसको। यूआईडी इसमें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट जाता है क्या? On the way, I've heard. तो वेपन के साथ हम देखो आपको इसका भी 4 स्टार आ गया है।
कुछ करो देखा नहीं था यार इसको 4 स्टार में। 4 स्टार आ गया। एसेंड करने की आइटम का तो है ही मेरे ख्याल से। शॉप देखना है ना आपको, एक मिनट शॉप दिखा देता हूँ। मैं तो 3-4 विश तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। शॉप कुछ भी नहीं है यार मेरे को। वो वाला कहाँ से आता है? यू कैन प्ले विद अदर प्लेयर्स। हाँ वर्ल्ड रिक्वेस्ट तो आते रहता है मेरे पास, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्टोरी में वो कर रहा हूँ। इसमें भी वो मोड होना था यार। क्या बोलना चाहिए, बात करने वाला। पाइमंस बार्गेन सेक्शन ओपन करो। अच्छा रुको, स्टोरी आ गई। मास्टर डीलुक का बहुत तारीफ सुना यार, अच्छा है क्या ये? The Dark Knight hero is Master Diluc? अच्छा यही है कि डार्क नाइट हीरो। क्या बात है। After managing to steer स्टोरी में clear of the अच्छा guard's है। patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please गेम tell में me you ट्रैश didn't है। come up with that. How is this the first गेम you've में heard of the मतलब नहीं name? समझ पा रहा हूँ मैं। Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with अच्छा idle इसको chatter. वही नहीं किया गया। Though, I suppose I फाइट may में बोल take रहा the हूँ, एक्शन में, idleness of फाइट others करने में। as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should यही है come कि up डार्क with नाइट हीरो something कौन more है यार? अगर original. यही है तो हाँ बोल दो, नहीं तो स्पॉइलर मत देना। Captain Pie. Pie? गेम स्टोरी में डीलुक काफी पावरफुल। अच्छा स्टोरी में पावरफुल दिखाया है, Tell us, Captain Pyro. एक्चुअल What में नहीं happened है here ना। today? इसका टेस्ट रन भी तो आया था। It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. Who would be helping whom is debatable. But as a The playable Knights character, he are, is for the most part, an the weakest utterly 5-star incompetent character। bunch. ऐसा I cannot trust them to take this खेलने matter से over. मेरे को भी तो लगा कि What's past is थोड़ा past. 5 I would स्टार के हिसाब से prefer तो है not to नहीं, discuss क्योंकि it. स्टार्टिंग में ही इसका Well, भी आता है I hope this खेलने के लिए। conversation has been of एज अ गेस्ट service खेल to you. सकते हैं इसको भी। Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master Diluc? Your wish is our command. You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. मेरा थोड़ा वॉइस और लिप सिंक आगे पीछे हो रहा है यार। What's that sound? चेक माय कैरेक्टर। Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They अरे आप तो appear to 3 just साल be से खेल small रहे हो तो timers. आपका तो हो You should गई। have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on Search account in of a few friend lackeys. section। I shall have to let ओके you take वेट, care of इसका them. ये कहानी खत्म होने Remember, दो फिर don't चेक करता tell हूँ। a soul.
आपको वो शॉप भी दिखाना है ना मेरे को? Hey, you're just gonna leave us like this? अरे 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 अरे, Windblade! बड़ा मार के Let the show begin. Huh. Huh. Go, Barbara, go! This moment will be frozen in time. Cool it! Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. और Did you see बताओ anything कहाँ out से of हो, the कहाँ से यार ordinary? आप? Nope, nuh-uh, not इंग्लिश here. बहुत बोल रहे हो, Nothing, इंग्लिश बोल रहे हो तो Unless you're looking for the Dark Knight साउथ hero, से in हो which ऐसा लग रहा है case... मेरे को. Shut it, fine. The Dark Knight hero. You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, him! हरियाणा, अरे क्या बात है यार, हरियाणा से हो के मतलब इतना. You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your हरियाणा. service to this city. कबड्डी फेमस है, बहुत देखते हो कबड्डी? Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? अरे यार. Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. एक मिनट होल्ड करना भाई. हेलो ब्रो, हेलो हेलो. सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हरियाणा अंडररेटेड तो कबड्डी देखते हो आप? मेरे को कबड्डी बहुत पसंद है. मेरा वर्ल्ड लेवल 1 है यार. अभी तो खुला है वैसे वर्ल्ड लेवल मेरा. आप वो कहाँ से करूँ मैं? शॉप ओपन करना बोल रहे थे ना? इसके वाले में जाके कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? विश वाले में जाऊँ क्या? इसको बोलते हैं क्या है यार ये? इसको क्या बोलते हैं? इंटरवाइंड फेट. अच्छा, इंटरवाइंड फेट. No, I don't watch it. Shop, Paiman's bargain. ये पाइमन बारगेन हो गया. ये तो शॉप आ गया है इसमें. इसी को बोल रहे थे ना. और कहाँ है? और कोई अलग से है क्या? ये तो इवेंट इवेंट है. ये तो मेल है. स्टारडस्ट एक्सचेंज है कहीं? स्टारडस्ट एक्सचेंज
आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या है आपका 8040 37210 लाइट नाम है आपका। टोटल अचीवमेंट 597। ओ भाई लेवल 92। जेनलिंग लेवल 80। चलो ऐड करके जेनेसिस नाम से आएगा। फर्स्ट ओपन द शॉप ओपन कर ली। 5 मंथ्स बारगेन में आ गए। स्टारडस्ट एक्सचेंज में आ गए। अच्छा यहाँ तो सब आइटम है यार, इन लोग क्या करूँ। अच्छा इससे इंटरवन फेट खरीद सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तो 75 है अपने पास, लेकिन इसे तो 3-4 ही आएगा यार। 125 का है, अभी 75 में मिल रहा है। समझ गया समझ गया। कर लूँ क्या अभी एक्सचेंज? -40% मिल रहा है, मेरे पास 210 है। 75 75 140 और 70 200 205 3 तो आ जाएगा। बताओ कर लूँ? % ऑफ सिंस रिलीज चल रहा है, ऐसा है क्या? तो मोए में बना रहे हैं एक्सचेंज फॉर इंटर। चलो आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं। 2 ही कर सकते हैं क्या यार एक बार में यार? अच्छा 60 ही बचे। 75 75 140 70 70 150। अच्छा नहीं 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 होगा, सॉरी सॉरी। स्टार ग्लिटर एक्सचेंज, इसमें क्या? अच्छा इसमें इससे हो सकता है, ऐसा है क्या? कैरेक्टर खरीदूं क्या? कितना है मेरे पास? 10 ही है। अरे तो 34 एक मिनट रुको यार। तो कहाँ गया? बैटल पास में भी तो मिलता है क्या मेरे ख्याल से? एक 2 3 4 बहुत कम मिलेगा यार बैटल पास में। अब वो कहाँ से आता है वेल्किन मून वाला? Seems all the other knights already have their hands full. Ignore rest of this. Always exchange for intertwined fates. Okay brother. वेल्किन मून वाला पास Greetings. कहाँ से आएगा I यार? thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. Top blessings of the Welkin Moon. You're too kind. Okay, रुको देखने दो मेरे को। Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. और बताओ भाई, पानी गिर रहा है क्या उधर? Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad भी नहीं folks. आया यार।
But I do hope you क्या will बोलना visit the Knights चाहिए? of Favonius soon, where we can discuss the Dark Discord Knight पेज hero वाले situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Duty calls. गर्मी हो गई I भाई। must be going. अरे यहाँ तो Stay बहुत safe, ठंडी हो traveler. रही है यार। कल तो इतना तूफान जैसे पानी आया है यार। शॉप में Seems like जाना है heaven. सबको। अच्छा यही है। डेली ये सितारा मिलेगा इंस्टेंटली, ये 300 मिलेगा डेली। क्या होता है 90 वाला? आउटफिट तो नहीं चाहिए। फिर ये सितारे के करूंगा क्या यार मैं? जो सितारा मिल रहा है मेरे को, सितारे से होता क्या है? There's something he really wants to say. सितारे से एक्सचेंज होता है कुछ? प्रीमोजेम से कुछ होता है? अच्छा नहीं तो उससे ये प्रीमोजेम से कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये मिलता है कैसे? इंटरवेंड फेट भाई, ये तो मेरे 160 में मिल रहा है, तो 2700 है मेरे पास। भाई ये तो बता ही नहीं आप, परचेज विद प्रीमोजेम्स। क्या यार मोए मोए कर रहे हो आप भी मेरा यार। स्टारडस्ट सेक्शन बता दिए, स्टार ग्लिटर बता दिए, परचेज विद प्रीमोजेम बताया ही नहीं है। खरीदूं क्या इसको? 17 पूरा खरीद लूं क्या? बताओ पूरा 17 खरीद लूं? कैरेक्टर खोलेंगे फिर। छोड़ो रहने दो, बाद में खरीदेंगे। स्टोरी में देख वैसे आप नहीं यार, एकदम ही नहीं हो। बस वो स्पॉन्सरशिप वाला मंडे को बताऊंगा, बोला है अगर वो दे दिया मेरे को ब्लेसिंग्स ऑफ द वेल्किन मून फ्री में, मंडे तक वेट कर लेता हूँ। अगर स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया तो दे देगा फ्री में वो, नहीं तो फिर यार। Wolf for Curie. It's you two. Curie. Thank you for coming. Curie है कि Curie So, है? the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with मंडे me? तक रुक जाता हूँ, नहीं तो खरीद लेंगे। Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible वैसे जैसे बोल handwriting. रहा था वो क्या है? Let me take a closer look. मैं इससे पहले तक नो कमेंट्री स्ट्रीम कर रहा था ना, मतलब कुछ बोल नहीं रहा था स्ट्रीम में, नो कमेंट्री गेम प्ले स्ट्रीम कर रहा था, तो व्यू तो Indeed. आ नहीं रहे थे। Although this is written in the common tongue, it अभी appears भी that a आप मेरा cipher has been used in many पिछला स्ट्रीम places. जाके देखोगे तो व्यू नहीं आएंगे, Nevertheless, लेकिन one उसके can पहले grasp वाला the मैं वो general खेलता message था। from the non-ciphered portions alone. Shadow This Fight, is a Shadow war Fight 4 declaration from the Abyss Order to the Fury। Dark Knight hero. तो The bad guys want the शैडो Dark फाइट Knight का hero आप to go लाइव away स्ट्रीम देखो तो forever 100 and 150 ever? व्यू आ जाते थे उसमें, Something 60 like 70 that. व्यू 100 व्यू चले Thus, जाते we थे are इस लाइव hoping to स्ट्रीम में। contact him as soon as फिर possible बंद so कर that we दिया can attempt to 3-4 महीने, coordinate a response. बंद कर दिया। फिर After all, अभी this matter no longer Genshin concerns Impact merely स्ट्रीम the चालू Dark किया। Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out तो anything at all, come and find me. अभी इसमें व्यू कम आ रहे थे ना, तो लग नहीं रहा है वैसे वो। देखा मैसेज दिखाऊं उसको आपका? जापान का है शायद, तो जापान का है, चाइना का कहाँ है पता नहीं। अरे नहीं इसमें नहीं है यार, वो तो उसमें है Operation दूसरे set वाले by the मोबाइल में। Abyss Order. Oh, this is not good news at all for Master Diluc. Go to the dawn binary. We should go tell him right away. आपका एडवेंचर लेवल कितना है यार? तो ये एनिमो क्रिस्टल कहाँ ऊपर ऊपर भगते रहते हैं भाई।
ओपन विश एंड फुल फॉर च्योरी यार। अभिश कर दूं क्या स्ट्रीम में ही? तुरंत एकदम। यार 56 यही है ये कर रहा है। But sold it. My original account was AR60 but sold it. ऐसा मतलब बेचते भी हैं इसमें? Master Diluc! कितने में Just बिकता है? now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. 7,000 INR. So, what's the plan, क्या बात Master है? Diluc? I'm open to suggestions. No. That would be playing right into the hands of the Abyss 55 Order. star character. They know full well that we don't exactly see eye to eye. बाप रे। They're using this as a means to force me into making an appearance. मतलब If blessing my identity were 7,000 INR exposed, yes. all my future activities would be subject Blessing to some सबसे degree of welcome मोन लेना ही interference from the Knights. सही है मतलब में। After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Woo! The Abyss Order has really dealt you a tough hand ये लोग this कहाँ time. हैं यार? इतना डाल दिया मेरे को लगता है इंस्टाग्राम में भी bunch अपडेट those करना guys पड़ेगा are. मेरे को। There is a way. But for it to work, I need some more information. आ तो रहे हैं लेकिन Specifically, रिप्लाई मतलब I मैसेज need नहीं to कर रहे हैं। decipher the obscured portions of the Abyss उनको Order's बोलना war पड़ेगा डिस्कॉर्ड declaration. में। Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, इसके पहले भी used to spread messages within the organization. मतलब गेंशिन वाले बहुत आए हैं, It's not simply a war लेकिन मैं declaration, कुछ बोल नहीं रहा था but ना उस also a टाइम तो notification to their own. When you take a चले गए stand वापस। that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow! Seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and तो villains are two sides of the हरियाणा same से हैं coin. अपन, और क्या करते So हो what गेम are we खेलने के gonna do अलावा? about the intel that's written in gibberish then? How do we एग्जाम हो गए आपके बोर्ड एग्जाम? gibberish-fy it? Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. फाइनल ईयर बीएससी। ओ बीएससी मतलब डॉक्टर। टू मोर एग्जाम्स एंड आई विल बी फ्री। तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं खेल रहे होगे ना आप गेम? अभी भी खेलते हो? कहाँ जाने बोल दिया यार। एलिमेंटल टायर में जाना है। I will install on 24 अप्रैल। फिर से इतना This is the place. बड़ा गेम को Abandoned ruins like these are कैरेक्टर precisely the आएगी kind of place the Abyss एल Order likes to का camp out. इतना Come बड़ा on, गेम को फिर there's से no आप time to lose. इंस्टॉल करोगे यार? हार्ड लेकिन हो इनके नाम बड़े अजीब अजीब है ना। 2 साल पार्टी चेंज करते हैं यार रुको यार। खेलों के लोगों के साथ यार, लेकिन देख
कहाँ है? और इसको तो नहीं चेंज कर सकते अपन, है ना? लेवल 20, लेवल 20 वो कितने की है? लेवल 32 है ना, तो 12 को हटा के इसको रख लेता हूँ। Oh, you're taking me out? अबे यार, जेनेसिस को हटा दिया क्या मैं? ओ, टीम रोटेशन बताता हूँ। हाँ, ये एलिमेंटल के हिसाब से वो करते हैं ना। यार अब तो पार्टी कॉन्फ़िगर भी नहीं हो रहा है, क्या करूँगा? पिछले 1 साल तक सबसे पावरफुल कैरेक्टर था बारबरा काया बेडियो नोले। रखा तो वही हूँ यार वैसे। नहीं, बारबरा नहीं है ना, बारबरा का लेवल कम है ना यार, इसलिए मैं लीजा को रख लिया हूँ अभी। उसके बाद नए कैरेक्टर्स ने पावर क्रीप कर दिया। जब स्टार्टिंग में था गेम तब ना, अभी मेरा पार्टी बदल नहीं सकता ना यार अब। Come a little closer. You've been a naughty boy. गलत जगह वो कर दिया। ये लोग बहुत बेकार लगते हैं सब। Dodge this. काया मस्त लगता है, बहुत फास्ट मारता है। Freeze. अबे भागो भागो भागो। डी लोग को लेते हैं। Retribution. उसके बाद नए कैरेक्टर्स ने पावर क्रीप कर दिया। देखो अभी चेंज हो रहा है, अभी भी नहीं। मेरे को लगता है इसी से खेलना पड़ेगा, रॉयल को लिया जाए। I must leave no stone unturned. Can't change team impact domain। हाँ, पता नहीं था, मैं गलती से लीजा को ले लिया और अभी यहाँ पे सब लीजा तो कोई काम की नहीं है लोगों के उसमें, मतलब क्रायो के लिए सही है। ऑयल को लिया था। लो यार डील।
ये डिलुक के ऊपर वुल्फ वाला क्या बनता है यार? Steady as stone. अब मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर As a good knight should. Oh, so sorry. Dodge this. Ah! Freeze. To ashes! Verdict इधर इधर यार कहाँ से आ गया है? अच्छा वो लीजा का मैं अल्ट यूज नहीं किया है। Blitz. Let's spark things up a little. कहाँ भाग जाता है यार ये? Cool it. Eyes on me! It's not over. I must leave no stone unturned. Time for retribution! This moment will be frozen in time. प्रीतम मंडल हेलो ब्रदर यूज ओनली डिलीट ऐसा है क्या? I am no लगा मेरे knight को of भी वही रहा Favonius. बाकी क्योंकि Now start मिक्स अप talking. कैरेक्टर आ रहे हैं Now ना, plan. What is it? वाटर वाले, इलेक्ट्रो वाले, हाइड्रो वाले और कहाँ से हैं प्रीतम मंडल ब्रदर अपन? You appear to have misunderstood the situation you're in. Yes, March. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? It burns! Oh, Ember तो Let's see how long it takes for you to पायरो वाली crack. अच्छी है नहीं। Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! Playing dead won't help you. That fire was Ember nowhere near useless है। strong enough हाँ to. बस वो Oh, he seems to have Animal passed out. Hey, you sleep when I say सुअर you can और sleep. पक्षी मारने के काम आती है। गेंशिन एंड स्टार्टर टीम बेसिकली यूजलेस। हाँ, लीजा अच्छी लगती है यार। लीजा अच्छी है। Please stop!
tell you everything. प्रीतम मोंडल, ये तो पक्का बंगाल से होंगे अपन। चल। We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the लीजा अच्छी Mondstadt लगती है, city लीजा का gates होगा। at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me युग suffer बंगाल those से flames again. क्या करते हैं अपन प्रीतम जी? That's it? प्रीतम Well, I प्यारे। doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. बंगाली विक्ट्री स्टोरी समझ आ रही गेम की। स्टोरी तो यार यही है, अपनी बहन को ढूंढते रहता है बस, तो उसकी बहन मिलती नहीं है उसको। शुरू में मैं भी यही सोचता था कि कैन आई ज्वाइन को ऑप, मतलब Now that I have the information I need, co-op I क्या must होता है? prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius उसकी respond to बहन this मिलती matter. नहीं है उसको। Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? देखो वर्ल्ड What जॉइन just went रिक्वेस्ट आ रहा है down here किसी a का, moment ago. Master Diluc has लेकिन officially एक्सेप्ट नहीं reached कर रहा हूँ number अभी मैं, 1 on क्योंकि Paimon's people not to tick off under any circumstances list. स्टोरी थोड़ा। कैन आई ज्वाइन को ऑप, को ऑप क्या होता है यार, आपसे पूछा मैं। बारबरा लेना है ना, बेटू की जगह बारबरा ले ले। लीजा के बदले बोले। There's still a long road ahead. जी वर्ल्ड रिक्वेस्ट आप ही का था क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप हो तो आ जाओ यार, मेरे को लगा कोई और है। टॉक टू हक मैंने बहुत कुछ, रुको यार पहले मैं अपना हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। मल्टीप्लेयर के लिए पूछ रहा, हाँ हाँ। मैं वर्ल्ड रिक्वेस्ट में आपको मेरी आईडी कैसे मिली यार? वो ऑफ एक्सेप्टेड कहाँ गया? लेकिन एक्सेप्ट हुआ नहीं क्या यार? अरे एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो उससे होगा क्या वैसे यार, रिटर्न फ्रॉम वर्क? अच्छा इससे वो खत्म हो जाएगा क्या? अच्छा अरे प्रीतम भाई सुनो ना, मैं यार मिशन कर रहा हूँ, मतलब स्टोरी मोड खेल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इससे स्टोरी मोड तो होगा नहीं शायद। देखो ना खाली ये डेली मिशन के वो आ रहे हैं भारत, तो वो एक बार मिशन पूरा हो जाए ना, उसके बाद अपन एक स्ट्रीम करेंगे, उसमें वो करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे यूआईडी होती है। हाँ हाँ वो तो ये चलेगा मेरे को। कैरेक्टर कौन कौन सा है या, चलो मैं बाहर जा रहा हूँ ना, मैं वो कर रहा हूँ भाई, ठीक। करेंगे करेंगे चिंता मत करो, थोड़ा सा इसको समझ लो, मैं फिर मैं ये पूछ रहा था, ये वाला जो टेलीपोर्ट व्यू पॉइंट है एकदम आसमान में है बटर स्कॉच भाई, तब तक आपका कौन सा लेवल है यार? लेवल 60 में हो आप, है ना प्रीतम भाई? आर क्लोजर ये वाला जो टेलीपोर्ट व्यू पॉइंट है एकदम ऊपर आसमान में है, चढ़ नहीं पाता है वहां तक। लेवल वगैरह बढ़ाऊं तब होगा क्या वो?
टेलीपोर्ट वे पॉइंट ना वाला अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक। आर्कॉन कलेक्टर, आर्कॉन का मतलब क्या होता है? स्टोरी खत्म कर लो, मैं If we do not make contact with the Dark Knight hero soon, करवा दूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। it's स्टोरी you two. मतलब I must ये वाला admit, स्टोरी नहीं this यार। issue of the Dark Knight hero is proving to be स्टोरी something of a headache. मतलब We've just held a पूरा meeting to गेंशिन के decide स्टोरी on को an मेरे को वो appropriate करना course है of action. एक्चुअली में, इसको पूरा Can खत्म you guess करना what है। it is? Good one. But no. The Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight hero instead of the तुम्हारा Knights of नाम क्या है यार? Favonius. बटरस्कॉच ही बुलाऊं क्या? Well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? Archon, gods of Genshin. Doing just क्या fine बात without है? your protection so कुछ far, ज्यादा ही you know. खतरनाक नाम रख दिया आप। Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. तो Genshin के The offer gods of को protection आप is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over Genshin के full gods को and आप exclusive collect कर responsibility रहे हो। for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to चीज show क्लियर the करो मेरी might of आवाज the Knights of क्लियर आ रही है क्या? Favonius, मतलब to एकदम prove साफ to आ the रही है people कि that without the और Dark जोर Knight से बोलो। hero, they can still rely on the धीरे Knights थोड़ी to आ रही है। maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their मेरा hearts. रूम अभी नए नए If बने ना, तो anything गूंज happened रही to है the मेरी Dark Knight आवाज, बाहर hero, जा रही है, तो it इसलिए would मैं only पूछ रहा serve था। to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will कहाँ work गए if we यार? don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's छोड़ के no चले need गए to क्या? despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Quest completed. Wow, Paimon feels we saw a whole new side of the Finally. Knights of Favonius today. कहाँ गए सब यार? Paimon doesn't understand. Hello, hello, How hello. is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. पकड़ लिया दोनों। कहाँ हो ब्रदर? दोनों चले गए यार। बाप रे। यार ये चले गए कि मेरे को दिख नहीं रहा है? पीछे पे और कुछ है क्या? क्या है? ये सारे बुक है यार, ये भी लाइब्रेरी है। मैं इधर हूँ। अरे वो पूछ रहा था ना मैं आपसे, वो स्टैचू को टेलीपोर्ट ओपन कैसे अनलॉक करना है वो। About Kaya.
I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. चढ़ ही नहीं पा रहा Sounds था मैं like there's उतना a ऊपर. bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counter plan. चलो अब अपन आ गए तो लो सकता हूँ. That won't work. It will only arouse the Knights' suspicion if I don't show up as they're expecting. That's what Kaya is counting on. कौन पिन करो? Statue of 7 So what are अनलॉक we करना gonna होता है. do? Patience. ऐसा है क्या? Let me think for a moment. नहीं वो तो पता है, मैं If they बताऊंगा आपको intend फिर to से. monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? ये स्टोरी खत्म हो In जाएगा तो. Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. गेम I will make वॉल्यूम other थोड़ी preparations here in the कम meantime. कर दो. गेम वॉल्यूम कम करूं? डिवाइस वॉल्यूम ही है ना ये. अब बताओ तो. अब ठीक आ रही है क्या? या और कम करूं? Collect mist flower. Corolla from beside the water. क्या बोल रही है भाई? ये कहाँ से कलेक्ट करूँ मैं? मिस्ट फ्लावर कोरोला. ये क्या है? पानी उतना दूर है. क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? मारूं कैसे? अब सही है. अच्छा, ज्यादा मैं चिल्ला के नहीं बोल सकता ना. ये डेली मिशन में आ गया है. रैंक 32 चाहिए इसके लिए. ये तो ज्यादा ही है. थॉल द शॉट्स आउट, ये सब तो बहुत लंबे लंबे. ये तो है डार्क नाइट हीरो वाला यार. मिस, ये कहाँ घूम रहा है? देखो ये एनेमो क्रिस्टल. शर्म आ रही है? मिस्ट फ्लावर कहाँ से लाऊं भाई? मिस्ट फ्लावर में the reason Kaya is blind in one eye is cause Diluc tried to kill Kaya. सच में? भाई क्या अफवाह फैला रहे हो यार? भाई कितने सारे एनिमल क्रिस्टल घूम रहे हैं इधर. मिस्ट फ्लावर चाहिए ना. कहाँ से लाऊं भाई मिस्ट फ्लावर में? बिसाइड द वाटर. आ तो गया पानी के पास. ये तो स्वीट फ्लावर है. लिए काला ले लिए.
लोगों को बार बार हाथ मार। बहुत वो हो रहा है। कहाँ भाग गया है? Steady as stone. Wind blade. Dodge this. ये तो कुछ असर होगा नहीं। ये है क्या मिस फ्लावर? अरे रुको एक सेकंड। Someone needs assistance. All in a day's work. Fight those near the edge of अच्छा I'll catch up. Someone needs assistance. ये है क्या? स्मॉल लैंप ग्रास है। मारो लोग। I'll catch up. Leave it all to me. नीचे अबे Time to clean up. माँ का इधर ये तो वो हो जाएगा यार। अरे नहीं अपने पास वो तो है, बारबरा तो है। यूज एम्बर टू मेल्ट दो फ्लोर। हाँ वही कर रहा हूँ। बारबरा को हटाओ, एम्बर को लाओ। At the ready. भाई 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 दिवाली मना ले अपन, होली के टाइम दिवाली मना। अरे यार वह मर जाएगी, बाहर निकल। मिल गया भाई, एक ऊपर घूम रहा है उधर। I'll race you there. आजा तू भी। Another target tracked down by Outrider Amber. कहाँ मिला भाई? मिस फ्लावर है कहाँ? मिस फ्लावर कोरोला दिखता कैसा है ये? मेल्ट दो फ्लावर। अच्छा वही है क्या वो?
जो पीछे पे था। चार से लेकिन मेरे को 3 ही है। Told you I'd win. एक और कहाँ से लाऊं? I'll race you there. बिल्लों को मारूंगे। Bet you can't keep up with me. कहाँ मिलेगा भाई एक और यार? Keep walking near the edge of lake. I'll race you there. कंफ्यूजिंग बहुत है यार ये। Bet you can't keep up with me. लोटस हेड नीचे है। और कहीं लेक है क्या यार? इधर मिलेगा? वो भी नहीं है क्या लेकिन? कुछ तो मिल भाई। Bet you can't keep up with me. मेंढक पकड़। I'll race you there. क्या कर रहा है यार? एक तो पोल नहीं दे पा रहे हैं। वहां जाऊं क्या यार? गो बैक। ज्यादा ही आगे आ गया क्या? ऊपर से जाए। नहीं था ना यार, वहां देख भी लिया था यार। अरे यार जहाँ देखो ये मार दे। इसको भी मार ले भाई।
on the road. भाई सवेरे हो गया, रात भर ढूंढ डाला, मिस फ्लावर नहीं मिल रहा है मेरे को। इसे पूछूं क्या? तो वहां चले जाऊं क्या यार? एक और उगा देता है यहाँ पे तो क्या चले जाते। कलेक्ट करने 4 बोला है, 3 छोड़ दिया है। यहाँ जाऊं क्या यार? मिलेगा यार? ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं दोनों। मेरा नेट गया क्या यार? यहाँ पे भी नहीं है। Another test subject. Fry! Quite the fun. I got careless. Wind blade. I got careless. भाई मिस्ट फ्लावर कहाँ है? ड्यूलियो के घर के पास है ऐसा? जाऊं वापस उसके घर में? Is this an answer from this world? ये कहाँ घूम रहा है? भट्टा उगा के रखा है। अरे बैगन पसंद है कि घर के पास, मतलब घर के पास वाले लेक में होगा कि घर के पास ही जाऊं सीधा? क्या सारा गाजर उगा के रखा है बताओ।
हाँ खुले में घूम रहा है। कहाँ है भाई? आ तो गए इसके घर के पास में। Well, that's not bad. बैगन का खेती करता है, बताओ यार। Is this an answer from this world? भाई रुला देगा लगता है। अरे खरीद ही नहीं सकते क्या यार अपन? फाउंड इट डाउन, अरे फाउंड इन द वाइल्ड। भाई खरीद नहीं सकते क्या इसको? घूम तो लिया भाई, पूरा डाउन वाइनरी घूम लिया मैं। एज ऑफ द लेक। मिल जा भाई मिल जा। क्या क्या मुझे पड़ा है? नहीं है यार इधर। I'll keep this close. Bet you can't keep up with me. एक तो वहां गया था तो पूरा लेक घूम डाला यार।
स्वीट फ्लावर तेरी माँ का। क्या करेंगे इसके